नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागड़ी वड़कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए लंबे इंतराल के बाद देश कपूर सर फ्रॉम दृष्टिकोण.com. ही इज वन ऑफ माय सुपर सुपर सीनियर्स फ्रॉम स्कूल. मैं वो भूलती नहीं हूँ बिकॉज दैट्स हाउ वी गॉट इन टच. एंड इज बीन बिजी फॉर अ व्हाइल और फाइनली वी गॉट इन टच और दोबारा हमने शुरू किया. आज का जो मुद्दा है वो डार्क है थोड़ा सा. एंड देर इज समथिंग वेरी पीकुलियर अबाउट इट. लोग उसका, जैसे अभी मैं और देश सर बात कर रहे थे, लोग उसका मसाला वाला पार्ट तो जान रहे हैं, बट देर वॉज अ मच मोर बिगर एज साउंड्स कॉन्स्पिरेसी देन इट लुक्स लाइक, एंड अ रियल वन. मतलब दिखाया कुछ और जा रहा था, पीछे में गेम कुछ और चल रही थी. एंड विद दैट आई एम a very warm welcome, sir, after a long time, and let's get started. Ji. Gayatri, thank you for calling me again. It's always a pleasure to be with you. So, so about Jeffrey Einstein. ये जेफरी आइंस्टाइन है कौन? एंड अभी इसका मुद्दा इतना ज्यादा क्यों उछल रहा है? वो इसलिए उछल रहा है क्योंकि एक 2015 का एक सिविल डेफेमेशन केस था. एक बंदी थी वर्जीनिया गोफ्रे, वो अमेरिकन है. तो उसने बोला कि आइंस्टाइन ने उसको अब्यूज किया था, फिजिकली अब्यूज किया था व्हेन शी वाज अ माइनर. एंड उसका आइंस्टाइन की जो गर्लफ्रेंड थी मैक्सवेल, गिस्लेन मैक्सवेल, वो उसके साथ थी इन सब कारनामों में. तो ये कोर्ट केस चला पिछले दिसंबर में. एक्चुअली ये दिसंबर 18 अभी उसने जज ने बोला कि जो केस के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको हम पब्लिक कर देंगे. तो एक के बाद एक 3 अब तक बाहर निकल के आ चुकी हैं डॉक्यूमेंट्स के ट्रांच के सेट्स बाहर निकले हैं. तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बड़े सारे लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, और बड़े इंटरेस्टिंग इंसाइट्स उसमें मिल रहे हैं. लोग ये समझते थे कि जैसे ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प, he would be part of it. Well, he was mentioned, but he was mentioned that like nobody had seen him there in the Epstein Island, which was known to be an island which was where all this stuff used to happen. A lot of people have been allegedly कि वो वहाँ गए, वो वहाँ जाते थे. सो पहले बात करते हैं एप्स्टाइन था कौन. तो he was actually 1974 में he was just a physics and math teacher मैनहट्टन में. और फिर उसके बाद ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक में गया एज अ फ्लोर ट्रेडर, और बाद में ऑप्शन ट्रेडर बना. एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग वेल्दी क्लाइंट्स के लिए ही स्टार्टेड डूइंग सम कंसल्टिंग, investment consulting and all those things. And that's where his whole thing started. And it was a very sharp rise. जब ऐसा शार्प राइज होता है ना किसी का, तो बड़ा ध्यान से उसको देखना चाहिए. तो इसने ये आइलैंड पे बहुत सारे लोग आते थे, बड़े सेलिब्रिटीज आते थे, बड़े सारे नाम हैं. टॉम हैंक्स है, बिल क्लिंटन का नाम दिया है, प्रिंस एंड्रयू. I would like to pause you. उधर जाने से पहले ये टीचर थे, इनके कंसल्टेशन के हुए, तो इन्होंने आइलैंड कैसे खरीद लिया और आइलैंड पे इतना बड़ा काम? जी. तो इन्होंने पैसे काफी कमाए उन सब चीजों से. एंड देन आई थिंक ही गॉट इन्वॉल्व विद द like celebrities and high net worth individuals. And basically he understood that that was one way to find a compromising information to actually go forward and become stronger. So one of the things that he did was in 1999 I think he bought this island for around $8 billion. And then पहले तो इसने ऐसे ही खरीदा होगा for his own like enjoyment or like own statement, but later on he realized that it can be a very good place to do a whole lot of activities which the US government directly cannot intervene on. So ये कैरेबियन में ये आइलैंड है. And so basically इसमें बहुत सारे celebrities आते थे. Tom Hanks has been one. Prince Andrew's one of the prince, वो जो है उसका like UK का, he was a regular visitor, and he was involved with all these things. And then Bill Clinton का नाम आया है. Bill Clinton के बारे में in fact
एक बंदी ने ये भी कहा कि the phrase that was used was he likes them young. So that's what was used, and he was a multiple. He in fact, abhi Hillary Clinton was there. Yeah, like this is a photograph. Like this is actually a painting that was there in Epstein's own home of Bill Clinton. And अभी एक या दो दिन पहले कल ही शायद हिलरी क्लिंटन गई थी, and somebody actually asked, shouted and asked her, what was Bill Clinton doing there 26 times on that island. So it is very interesting about like this thing. Okay, Bill Clinton वहाँ गया, and then people who also went there included Israel's former Prime Minister Ehud Barak, was also the head of military intelligence of Israel. Even a CIA director who was at that time a deputy secretary of state, William Burns, he also met Epstein many times. So, like, one of the things that is coming out now is that he might actually be a CIA asset, and he was a CIA and Mossad asset. More Mossad and less CIA, but like he was an intelligence asset for either both US and Israel, or more for Israel. And the reason is because he had a non-prosecution agreement with the US government. मतलब ये जो सारे operations वो run करता था, उसके लिए उसको prosecute नहीं किया जाएगा. And that non-prosecution agreement or NPA का जो fact है, that has come out in these papers also. So which is very interesting. And उसके तो ये जो है ना, जब हम इसको देखते हैं ये ऑपरेशन को, और जब CIA का जो modus operandi हम देखते हैं, like many years back, like it had come out that they used to have a black book on many of the important people, and they used to use honey trapping, like very openly. So this was part of that. So they would take, in fact, this guy Epstein had a lot of information about many people, many powerful people within US, outside of US, and around the world. And like it was very tough for him to have lived on. तभी जब वो जेल हुई उसको, he was उसका कहा जाता है कि उसने सुसाइड किया जेल में. और ये कहानी हमारे हिंदी फिल्मों में, सी ग्रेड मूवीज में इतनी ज्यादा चल चुकी है कि हम सब लोग जानते हैं कि इसमें होता क्या है. वो अगस्त 2019 में ऑन 10th of August ही डाइड. जब ऐसा बंदा जब जाता है जेल में और जेल में मारा जाता है, उसको कहते हैं सुसाइड किया है, तो आई थिंक दिस इज, वी ऑल नो हाउ इट हैपेंस. सो बेसिकली इसको किसी ने मार दिया बिकॉज ही हैड अ होल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, एक मीम जो बहुत एक इंफॉर्मेशन से लेके बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है आज और कल के अंदर, वो है स्टीफन हॉकिंग का. स्टीफन हॉकिंग वाज आल्सो वन ऑफ द पीपल, वो दैट साइंटिस्ट जो चेयर पे बैठा ऐसे बैठा रहता है, वो he used to go there, and he said he used to like midgets, I would say like not well dressed, like not properly dressed midgets who were writing complex equations on the blackboard. That was his thing. Fascination. So basically there were a lot of people who used to play out those fascinations or fetishes out there in that like on that island, and he used to make that happen. He used to also like minor girls. I think that's what like it was with Stephen Hawking as well. And और ये कहा गया है कि Prince Andrews तो एक prince था. There was another prince who used to go there. Now that name has not been given out, but there was another prince who used to go there. And there's a lot of stuff that has happened, but I think ये तो सब वो sleazy part है. उसका real part है वो ये है कि how CIA and Mossad was using him as a front to run the blackmail operations that used to go behind the scenes. So basically, अगर
हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज अगर हो जाए कोई तो इट्स वेरी इजी टू रन ऑपरेशंस अगेंस्ट दैट कंट्री और अगेंस्ट दैट ग्रुप. हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा हनी ट्रैपिंग होती है फ्रॉम पाकिस्तान. आई थिंक दैट्स देयर लाइक मेन दिस थिंग. और आदमी औरत दोनों होते हैं. एक माधुरी गुप्ता हुई थी, एक आपको याद होगा, एक इंडियन डिप्लोमेट थी. So Russians call this thing as compromat. Yeah, so that's their word for the compromising information that they get through such operations. That's very common. But the real thing was how this guy was used. And ध्यान कहीं और रहा लोगों का कि of all this like underage abuse that was going on, which which is sleazy and all those things. And वो लोग तो ये थे कि कौन कौन जाता था. Bill Gates was another one of them. A lot of like celebrities like used to go. And ये जो है ना, and there is also some people have also alleged that Oprah was also involved somewhere in this. And I can't say for sure, but there is a lot of allegations. In fact, by Angelina Jolie, के जो Oprah के जो schools हैं in Africa, they are not run properly. That's what Angelina Jolie says in a very politically correct way. But what she really wants to say, and what a lot of people have alleged, is that Oprah ने जो schools और जो orphanages जो run कर रही है Africa में, they are more as a source for the the people like who are sent over for abuse, like in these kind of operations, especially Epstein के operation में, वो भी इसके साथ कहीं ना कहीं linked. So there is a lot of such thing that like that was involved. And I think वो तरह तरह के use करते थे like abused victims to like things like coming from like the ex-Soviet countries, Ukraine and other countries. वहां से बहुत सारी models, underage models वहां आती थी. तो this is and like human trafficking is a big thing. It is said that every year there is around 600,000 to 800,000 people who are human trafficked, who are trafficked around the world, men, women, and kids. It's and that is a very low reported number. It's much higher actually. And all this thing happens. In fact, just Ukraine war, for example. Let's talk about that. So Ukraine war के दो तीन aspects हैं. One is obviously the military intelligence stuff. कि US जो है, it is going to make profits by selling its arms. But I've read a lot of very credible information, articles and research where they've called Ukraine as a golden opportunity for human traffickers and organ trafficking. So basically, जब ऐसी wars होती हैं और जब वो society बिल्कुल डूब जाती है, तब ये लोग use करते हैं उस society के vulnerable जो elements हैं, जो लोग हैं, to siphon them off, to push them off into these kind of operations, and then use that for their own intelligence, gathering that they do through blackmail. तो हमारा वो हनी ट्रैप वाला जो बात है वो that is done in a very sophisticated, at very large scale, and it's a big money operation. I mean, there is a lot of money. जितना money उनको military intelligence से मिलता है, उतना ही money उनको इससे मिलता है. That is why it is so big. So there were reports that he has committed suicide, और उस पे भी contest कर रहे हैं. So question number 1. And दूसरा question ये है कि ये जो blackmailing कर रहे थे, इसका ultimate purpose क्या था? Was it money or political sabotage या
किस तरीके का एडवांटेज? वो वहाँ आई मीन गवर्नमेंट तो जो कहती है वो कहती है. इनफैक्ट the credibility of the US government anyways has gone down and most of law enforcement has gone down क्योंकि यहाँ कोई बिलीव ही नहीं करता US गवर्नमेंट को. तो उन्होंने उसका क्या रीजन दिया गया और क्यों वो मारा गया, बिकॉज इफ यू रियली लुक एट ऑल दिस थिंग, पीपल लाइक बिल रिचर्डसन नॉन मेक्सिको, वो न्यू मेक्सिको का गवर्नर था. ही वाज वन ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स. David Copperfield, that magician, he was another one of them. There are a lot of very high profile people who were involved in this. And होता क्या है कि ऐसा नहीं होता कि जिस इंसान को पकड़ रहे हैं सिर्फ उसी से इंफॉर्मेशन लेनी है, मतलब जिसको वो वहां बुला रहे हैं, वो इंसान दूसरों से भी इंफॉर्मेशन ले लेके उनको दे सकता है. तो दे आई मीन दिस इंटेलिजेंस ऑपरेशन का जो एंगल है, दिस हैज बीन रियली ब्रॉट आउट बाय दीज कोर्ट केस डॉक्यूमेंट्स. अगर ये कोर्ट केस के डॉक्यूमेंट ना निकलते तो अब तक ये सिर्फ एक स्लीज का एक केस था कि so many high profile celebs were there, but why? And so what they do is, one, they put people in a compromising situation. And जैसे वो बिल क्लिंटन की आपने फोटोग्राफ दिखाई. Now Bill Clinton never wanted that photograph out. In fact, Bill Clinton went to Vanity Fair का magazine का office and he threatened them to not bring out any article on Jeffrey Epstein, because like somebody would have threatened Bill Clinton, and that is why he took that step to actually go to their office and threaten them. अब जिसकी ऐसे पेंटिंग वहां बना के लगाई होगी उसने तो आप खुद सोचो ना. तो ये जब ये बात करते हैं कि जैसे विवेक रामास्वामी वगैरह, जब आजकल जो चल रहा है यूएस में, कि there is this deep state, like what Vivek Ramaswamy calls a managerial class. This managerial class or deep state runs in a certain way, and the way they do it is that they have the right people in their hand to do things that they really want to do. And one of the things that they want to do is control around the world. यूएस में तो करना ही है उनको कंट्रोल, पर यूएस को लेके बाहर को कंट्रोल करना है, बाहर के लोगों को. So that is what they do, and like we all know, part of the reason why India is being targeted is this, कि इंडिया उनके हाथ में आने वाला नहीं है. इंडिया नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, जो वो बिका हुआ था. आज की लीडरशिप है वो नहीं बिकी हुई. तो जब मोदी जी वहां गए थे और जिस तरह की डील्स ये कर रहे थे, पर दूसरी तरफ ओबामा अपना गाना गा रहा था वहां पर क्रिश्चियन अमनपुर के साथ. तो एक चीज तो बड़ी क्लियर थी, राइट, कि दे वांट इंडिया, बट दे वांट इंडिया विदाउट मोदी, बिकॉज इंडिया के पास पैसा बहुत है, इंडिया के पास सब कुछ है. इंडिया के पास सिर्फ एक लीडरशिप नहीं थी जो बिकी हुई ना हो. तो वो ये चाहते हैं कि लीडरशिप वही रहे जो बिकी हुई हो उनके साथ. मैं आजकल बुक वो लिख रहा हूँ आजकल एक, and one of the things, like I'm going through the history and the current geopolitical situation and how we reached where we reached. Like one of the things is very clear that it is a surprise to me how India has really even survived, because the kind of people that we had starting from pre-partition till now, वो तो भारत को बेचने के लिए बैठे थे. कैसे बच गए हम, वो हैरानी है मुझे. और अब जाके पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ काम करने की कोशिश की है, तभी उसके पीछे पड़े हुए हैं, बिकॉज वो बिकने वाला नहीं है इतनी आसानी से. And that is what these guys try to do, because like what they have done is, वो जब कह रहे हैं कि Ehud Barak जो था, he was actually a prime minister of Israel, like he used to go there. And other Prince Andrews means, like, maybe not directly, but like somehow even the Buckingham Palace was involved in all this. Buckingham Palace is known as a den of such activities anyways. Vatican is known as a den for such activities. Then the court case documents also talk about
another high-profile prime minister who used to go there. अब high-profile prime minister who used to go there, मैं तो सिर्फ एक वो कर सकता हूँ, guess कर सकता हूँ कि it must be from UK, because अगर हम प्राइम मिनिस्टर्स देखें, प्राइम मिनिस्टर्स तो सिर्फ कुछ ही देशों में होते हैं, हर जगह तो प्राइम मिनिस्टर्स नहीं होते, प्रेसिडेंट्स होते हैं. तो हाई प्रोफाइल प्राइम मिनिस्टर हु वुड बी गोइंग देयर, आई कैन गेस के somebody like maybe Tony Blair or somebody like that. Like, you never know, because those are the things which like those are the people who are very close to that positions of power at that time, when Bill Clinton used to be there, and then later on after those years, मतलब अगर हम 2000s में अगर देखें तो basically I think like it was to control how things are going, because आप खुद सोचो, how is it that Europe is being compromised, मतलब their entire security is compromised, and yet the leadership of Europe does nothing. मतलब उन्होंने अपनी पूरी सिक्योरिटी, अपना पूरा अस्तित्व यूएस के हवाले कर दिया है, जो डीप स्टेट है उसके हवाले. वरना यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन कुछ करती क्यों नहीं? अगर हंगरी खड़ा होता है, वो कहता है कि हम अपने घर के अंदर इन जो इस्लामिक कंट्रीज से जो आ रहे हैं रेफ्यूजीज, हम उनको नहीं लेंगे, तो यूरोपियन यूनियन एक्चुअली उनके खिलाफ एक्शन करना शुरू कर देता है, सैंक्शंस लगा देता है. How is it even possible? So there is something else which is going on, right? What is a missing link? कहाँ पर हो रहा है ये? मतलब कि who is forcing who? So the way I have been able to understand is that there is a deep state that is primarily from US, but like it has other people from like Europe and other countries, but जो यूरोप का जो है अस्तित्व वो ज्यादा दाव पे है. And so these guys ensure that the European governments, especially the European Union, do their bidding. क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना कि उनके जब आप कभी यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कमीशन के जो डिबेट्स होती हैं, कभी आप वो देखो, उनके लोग जो इंडिविजुअल जो आते हैं वहां पे, एमपीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दे से अ डिफरेंट थिंग. They are against all these refugees and wokeism and all those things that is happening, the wars that are happening. Yet European Union is going for that. जब डॉक्टर जयशंकर वहां जाते हैं यूरोप में, ही इज हाउंडेड जस्ट फॉर दिस कि आप पे यूरोप कैसे एतबार कर ले. वो ये कह रहा था ना, वो एक बंदा, कि आप पे यूरोप कैसे एतबार कर ले अगर आप यूरोप के साथ नहीं. Like, what is Europe trying to do? Like, why is Europe even trying to go for Ukraine? यूक्रेन से उनको मिलेगा क्या? यूक्रेन में ना तो कोई ऑयल है ना कुछ है, वो लड़ किस ले रहे हैं वहां पर? तो बेसिकली उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस उन्होंने अपना दाव पे लगा दिया फॉर समथिंग व्हिच इज नॉट इवन क्रूशियल टू देम. They keep talking about Russia attack करेगा, Russia attack करेगा. Russia had not attacked for so many years, and Putin actually attacked only when NATO had made such inroads. ये बहुत I can discuss a lot on Ukraine and how George Soros and US aid and like US का जो CIA that was involved in like setting up the government that was there, and doing all the interference and all those things, and how Putin kept on saying कि भाई आप पीछे हो जाओ यहाँ से, and don't interfere here, because we are not interfering in Mexico. But they never stopped, and so ultimately like he took action that he had to take. So ये जो है for Europe to go and back US up, whether it was Iraq or Ukraine, like this is like self-defeatist, because उनका इतना सारा तो गैस और ऑयल है, वो रशिया से आता था, फिर उन्होंने नॉर्वे से लेना शुरू किया, नॉर्वे उनको फ्लीस करता है. So that why would they actually put their entire existence on the line for nothing? Because the leaders who are making the decision are compromised. That is why now the leaders are being changed. अभी हॉलैंड में हुआ,
वो इटली की तो हम जानते हैं, मेलेनी को, एंड यू नो ऐसे और जो है कंट्रीज एक एक के बाद, हंगरी, पोलैंड, you know, all these are making changes now because the people do not trust their own leaders now, because they, I'm sure, must have been compromised to do the bidding of the deep state in US, because ultimately जो see आप ये देखो, US is by far the strongest military ever in history. You know, like अगर हम देखें like vis-a-vis the other countries, it is so strong that कि उसके बाकी के जो 10 जो कंट्रीज आते हैं उसके बाद, वो कंबाइंड उतना नहीं खर्चते जितना यूएस खुद एक खर्चता है ऑन मिलिट्री. डिस्पाइट दैट, वर्ल्ड वॉर 2 से लेके आज तक यूएस हैज लॉस्ट एवरी वॉर दैट इट इज गॉटन इनटू. नॉट जस्ट लॉस्ट ह्यूमिलेटिंगली. वियतनाम में उसको लास्ट, वो कहते हैं लास्ट हेलीकॉप्टर, उसको हेलीकॉप्टर पे बैठ के भागना पड़ा था वहां काउंसलेट से. उसको वो बहुत बड़ा एक वो है, आइकॉनिक पिक्चर है, हाउ दे आर लाइक ट्राइंग टू रश ऑन टू अ हेलीकॉप्टर टू लाइक गेट आउट ऑफ वियतनाम. वी सॉ एग्जैक्टली द सेम थिंग फ्रॉम यू नो अफगानिस्तान. जो वो प्लेन उड़ के जा रहा था, तालिबान वो अफगानीज उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, हमें बचा लो, एंड दे लेफ्ट अराउंड 20 to 30,000 US citizens in Afghanistan. How can such a army or such a military lose every war so humiliatingly? Because they are not in for winning the war. They are in for profits. हो क्या रहा है, अगर हम ढंग से इसको देखें तो टैक्स पेयर का मनी is used to finance these wars for trillions of dollars. And all this money that is taken from the taxpayer, it is like, मैं इसको कहूंगा कि it is the world's greatest, human history's greatest diversion of wealth from poor to select few. $165 trillion के आसपास बोलते हैं कि इतना since World War II has been spent on wars by US. ये पैसा टैक्स पेयर से लेके उन्होंने कुछ इलीट्स को दिया थ्रू द मिलिट्री कंपनीज, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो कहते हैं. Now what, like this is actually just you know a redistribution of wealth that has happened, and these guys have gotten so much of money. In fact, there is a study done by Rand Corporation which said कि अगर ये पैसा वाकई में नॉर्मल यूएस सिटीजन को दिया होता जो आज $65,000 कमाते हैं, they would have been earning 135,000, but they don't. So there is a real impact on normal US citizens, and that is the problem. कि इन्होंने ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया, और वो जो प्रॉफिट्स जो आते हैं, आर्म्स तो एक है, जब ये वॉर्स होती हैं देन देयर अदर यू नो कहते हैं ना साइड बिजनेसेस जो चलते हैं. ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वन ऑफ देम. So human trafficking, millions of men, women and kids are trafficked. Organs are trafficked. Organs लोगों के लेते हैं. And this entire thing is, इस entire complex जो ये चलता है, ये बाजार जो चलता है, इस बाजार का एप्स्टाइन एक बहुत बड़ा एक फिगर था, और वो ये वॉर्स करने के लिए और ये कंट्रोल करने के लिए जो ये लार्जर जो डीप स्टेट जो करती है, this was one of the tools that they were using. So you understand? So, like Epstein thing, कि ये जो डीप स्टेट का जो पूरा कारोबार है, ये कारोबार कराने के लिए वो एक टूल था जो हेल्प करता था टू गेट द कॉम्प्रोमाइजिंग इंफॉर्मेशन टू फर्दर impact and control people to make the decisions to perpetuate more wars. ट्रम्प को ये इसलिए हेट करते हैं बिकॉज ट्रम्प के टाइम में एक भी वॉर नहीं हुई, उसने वॉर होने ही नहीं दी. अगर ट्रम्प अगर अपना मुंह बंद रखता तो he would have probably been one of the best presidents, क्योंकि for the first time in history in last 1400 years the Arabs opened a consulate in Israel. Israel opened a consulate in Arab countries. It has not happened since Muhammad's time.
It has not happened. इनफैक्ट पहले तो ये होता था कि अगर आपके पासपोर्ट में अगर एक स्टैंप भी होता था कि आप वहां होके आए हो इजराइल में, आपको अरब कंट्रीज घुसने नहीं देती थी. How is it that they could actually open consulates? Because Trump openly went against his own intelligence, US intelligence. वो खुद बोलता था मैं US intelligence को बंद कर दूंगा और उसको साइड पे रखता था. That is the reason why these things could happen. So when this guy Joe Biden came back again, he thought कि world वैसी की वैसी है जो छोड़ के गया था. वैसी नहीं थी. सब बदल चुका था. वो मिडिल ईस्ट के बारे में हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या वहां बदल चुका है अब तक, और ये और बदलेगा. बाइडेन के सुपुत्र जो बाइडेन की भी बड़ी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स आई हुई हैं बच्चियों के साथ में. शर्म नहीं आती है. आई थिंक दे आर हार्डली 13. मतलब स्निफिंग की तो अलग है, सूंघने की. बट I mean, apart from that, they're very disturbing. I think I cannot even put it on the YouTube because otherwise strike will come. Those pictures are of underage girls जिसके साथ वो बंदा compromising position में पाया गया है. So that is also another thing. But sir, coming to the last part of this one, as you said, this is Jeffrey Epstein being used also against India? Is there any evidence there? अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं आया कि ही वाज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर कुछ और निकल जाए, बिकॉज हमारे यहाँ का जो प्रिंस है वो ऐसी काफी जगहों पे जाता रहता है. तो वी नो दैट दीज थिंग्स, अगर एप्स्टाइन नहीं कर रहा, कोई चाइना का एप्स्टाइन या पाकिस्तान का एप्स्टाइन होगा जो कर रहा होगा ऐसे कर. तो आई मीन see, the thing is, I think he was more into the high profile folks in US as well as in Europe, and also big scientists, big like entertainment people, because they are the ones who can make a lot of change. Because आप कभी ये देखो, this is sometimes just like look at the movies, okay? Hollywood is known as the center for liberal woke kind of people, right? Yet आप हॉलीवुड की सारी मूवीज देखो, जब भी दुनिया खतरे में होती है, ये पूरा प्लान खतरे में होता है, तो बचाता कौन है? हमेशा सॉरी, बट उनकी मूवीज में यही होता है, वो वही दुनिया को बचाते हैं, बाकी सब तो दुनिया को डुबा देते हैं. नहीं, एक्चुअली मूवीज में ये होता है कि वहां व्हाइट अमेरिकन होता है जो बचाता है, राइट? तो वहां कभी ऐसा नहीं हुआ कि एशियन अमेरिकन होगा या ब्लैक अमेरिकन होगा जो बचाएगा, और नॉन अमेरिकन तो कभी बचा ही नहीं सकता. सिर्फ एक व्हाइट अमेरिकन होता है जो बचाता है, और व्हाइट अमेरिकन भी वो तब बचाता है. लाइक इवन अगर एवटार में अगर देखें, वो वहां गया, वो खुद बदल गया और वो कुछ और जो भी वो था उस प्लैनेट के जो बंदा था वो बना, बट ही वाज स्टिल अ व्हाइट अमेरिकन. वो अपाहिज था, पर अपाहिज होते हुए भी उसने बचाया पूरी दुनिया को. तो उनका there is a very strong racist content that happens, that goes on in these movies, despite the fact that Hollywood is is considered to be such a liberal kind of a place. And so why does that happen? Because all these guys are compromised. So वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं. जो उनकी मूवीज होती हैं वो आज भी they are very strongly influenced by the larger narrative of the deep state. So would you like to add on the concluding note? So concluding note में I think मैं यही कहूँगा कि so when we actually look at anything, right, we have to see that there is more to those things than we actually see in the news, and those things are the ones which we should focus on more. ये एप्स्टाइन के जो केस में बहुत कुछ
मसालेदार वो सब निकलेगा, पर इसको लार्जर पिक्चर में समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आएंगे, वहाँ इंडिया के आसपास भी कोई आएगा जिसको समझना बहुत जरूरी होगा कि ये होता है तो होता क्यों है। तो आप पढ़ो सब कुछ, बट प्लीज अंडरस्टैंड द लार्जर पिक्चर। थैंक यू सो मच सर। Thank you. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ सर का मैगजीन है, प्लीज सब्सक्राइब दैट ऑल्सो, दृष्टिकोण.com। वीकली एक आर्टिकल आता है, बट दैट्स, मैं क्या बोलूं, एकदम थरली सर्च्ड होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्टाइल में, और बहुत सारे उसके एनालिसिस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होती है उनमें। So please do like and subscribe and share दृष्टिकोण.com as well. Thank you so much, sir. Jai Hind, Jai Shri Ram, Har Har Mahadev.